Please mute your mic, Akash. Lesson 19 we were doing, na? Religions of India. No, religions, India's with other world. ये क्या था ना? India's contact with other world. Yes, ma'am. Yes. That was, we have Ma'am, completed the chapter. Indian and outside world का reading करवा रही थी. Yes, we have completed the reading, and today now we have to do the question answer because A section के बच्चों का ये नहीं हुआ है. Yes, A section के बच्चों का ये नहीं हुआ है. So please all of you open your book, and that is the page number is ma'am. 160. 160 itself. Yes. Open and keep pencil. Open your book and keep pencil ready. First is the tick the correct option. First is the tick the correct option. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Who invented the paper first? China. 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 Very good. Right, China. D ko tick the D. Where can we still see the impact of Hindu culture in Southeast Asia? Cambodia. Cambodia. Yes, ma'am. Southeast Asia. Book है बलि नहीं होगा. बाली देखते हैं. बाली तो दिया नहीं है नेम को. बाली भी दिया है. स्वर्ण द्वीप में बाली भी दिया है. बाली नहीं होगा मैम. दिया हुआ तो मैम सारी दिया हुआ है जहाँ पर कि मैम इंडिया का इफेक्ट है मैम इंडियन रिलीजन का, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट मैम कंबोडिया में है इंडियन रिलीजन का. सबसे ज्यादा कंबोडिया में है. यस. कंबोज में है. हाँ वही होगा. कंबोडिया में होगा. अभी भी है. वहाँ एक मंदिर भी मिला है अभी. तो कंबोडिया को कर दीजिए. टेम्पल. हाँ अंकोर वाट टेम्पल. यस हो गया. कंबोडिया कर दिए. The brought gold from the west into our country. The Romans. Yes, the Romans brought gold from the west into. Yes, Romans. The main factor responsible for creating our contact with different parts of the Asia was Buddhism. Yes, Buddhism. Yes, Buddhism. Now, next question is. Our next question is. Buddhism spread in various parts of the world. Buddhism is spread in various parts of the world, largely due to the efforts of King Ashoka. Now, Ashoka. yes, Ashoka. Now, one का आंसर है D. Ma'am, can I repeat? 2 का B. 3 का C. 4 का D. And 5 का B. 5 का B. Yes, now. Kaustubh Narayan, repeat the answer again. Take the correct option. First, who invented the paper first? Option D, China. Second, where can we still see the impact of Hindu culture in Southeast Asia? Option B, Cambodia. Question number 3, the dash brought gold from the west into our country. Option C, Romans. 4, the main factor responsible for creating our contacts with different parts of Asia was. Option D, Buddhism. Buddhism spread in various parts of the world due to the efforts of King. Option B, Ashoka. Very good. Now fill in the blanks. Come on, fill in the blank. The Harappan culture is about 5,000 years old. 5,000 years old. 5,000 years old. 5,000 years old. years old. Number 2,
India's trade with the West was through Arabs. Arabs. Yes, Arabs, Arabs. Yes, Arab. India's trade with लेकिन एक चीज आप देख लीजिए Yes, ma'am. एक आप देख लीजिए कि ठंडा लग रहा है। एक दिया है पेज नंबर 156 में देखिए इंडिया वाज हैविंग ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज थ्रू ग्रीस पर्शिया एंड रोम दिस आंसर हैज बीन गिवन ऑन पेज नंबर 156 Yes, ma'am. मैम रोम होगा इसका आंसर। तीनों दे दीजिए ग्रीस पर्शिया एंड रोम तीनों को दिया है सिर्फ रोम नहीं होगा ग्रीस पर्शिया भी लिखिएगा तो वो भी सही होगा ग्रीस पर्शिया एंड रोम Kochi was another center of Indian culture. बुद्धिज्म। Another सिर्फ यहाँ पर इंडियन कल्चर लिखिए कोची was another center of Indian culture. बुद्धिज्म नहीं होगा इंडियन कल्चर होगा वहाँ पे The Chinese traveler Tishan came to India to study Buddhism. Study होगा यहाँ पे Yes, ma'am. Number 5, a reference of Champa is found in Vayu. Vayu Puran. Yes. Now फिर से देखिए एक बार. The Harappan culture is about 5,000 years old. Number 2, India's trade with the West was through Greece, Persia and Rome. ये तीनों कंट्री से हो करके वेस्ट का ये होता था. Kochi was another center of Indian culture. Whose mic is on? Please mute your mic. Mute your mic. The Chinese traveler Tising came to India to study Buddhism. Number 5, a reference of Champa is found in Vayu Puran. A reference of Champa is found in Vayu Puran. Aniket Anand, you have raised hand. What is your problem? 6A, Aniket Anand. Do you want to say something? No, ma'am. No, ma'am. You have raised hand. That's why I am asking. Have you some problem? No. No, ma'am. गलती से हो गया। नहीं कोई बात नहीं गलती से नहीं हो कोई अगर if you have a problem you can ask questions you are free to ask अनिका श्री 7A की है क्लास में 6A की अनिका श्री are you in the class अनिका श्री Yes, ma'am. अनिका श्री you are in the class but you are not responding अनिका श्री Urvi 6A you are in the class Urvi Yes, ma'am. Urvi now fill in the blanks का नंबर 1 का आंसर बताइए क्या है Ma'am, 5,000 years old. नंबर 2 का बोलिए India's trade with the West was through नंबर 2 का बोलिए Greece, Persia and Rome. ओके नंबर 3 का बोलिए कोची वाज अनदर सेंटर ऑफ बोलिए नंबर Indian 3 culture. नंबर 4 द चाइनीज ट्रेवलर टीचिंग केम टू इंडिया Ma'am, टू Indian culture. नंबर 4 आई एम आस्किंग नंबर 4 Study Buddhism. नंबर 5 a reference of Champa is found in Ma'am, Vayu Puran. गुड बहुत बढ़िया नाउ इट्स my next question is from अर्कजा यशस्वी 6B Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. बोलिए तो हाँ नंबर 1 अब बोलिए fill in the Five. blanks The Harappan culture is about 5,000 years old. Number 2, India's trade with the West was through Greece, Persia, and Rome. Number 3, Kochi was another center of Indian culture. Number 4, the Chinese traveler
T. Singh came to India to study Buddhism. Number 5. A reference of Champa is found in Vayu Puran. Okay, Abhigyan Sinha, are you in the class? Abhigyan Sinha? Yes, ma'am. हाँ बोलिए, इसका आंसर बताइए. फिल इन द ब्लैंक्स का पूरा 1 to 5 तक बोलिए. The Hampa culture is about 5,000 years old. India's trade with the West was through Greek, Persia, and Rome. The Kuchi was the another center of Indian culture. The Chinese traveler Std-6 came to India to study Buddhism. The influence of Champa is founded in Vayupura. चलिए ठीक है, गुड. नाउ नंबर 3, मैच द फॉलोइंग. अर्कजा यशस्वी. इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे. आप यू प्लीज पे अटेंशन. Okay, आपका ma'am. मिस्टेक होगा. प्लीनी, प्लीनी का लिखिए इटली. प्लीनी मैच द फॉलोइंग. प्लीनी इटली. फाहियान चाइना. डी. फाहियान चाइना. बुद्ध घोष श्रीलंका. बी. Lanka. बी होगा. Yes. महेंद्रा इंडिया. महेंद्रा का इंडिया. 4. सी. और यशु वर्मा कंबोडिया. यशु वर्मा कंबोडिया. प्लीज घर से आवाज आ रही. प्लीज म्यूट योर माइक. यस, अगेन मैच द फॉलोइंग. प्लीनी इटली. फाहियान चाइना. बुद्ध घोष श्रीलंका. महेंद्रा इंडिया और यशु वर्मा कंबोडिया. Ma'am, Yes. repeat. प्लीनी इटली. Yes, ma'am. फाहियान चाइना. बुद्ध घोष यस श्रीलंका. महेंद्रा इंडिया. यशु वर्मा कंबोडिया. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now answer the following questions in brief. Number 1, what did the Chinese learn from India? देखिए, the Chinese LEARNT learned cotton growing from India. The Chinese learned cotton growing from India. LEARNT. The Chinese learned LEARNT learned cotton growing from India. मैम Yes. मैम मैंने लिखा है द चाइनीज लर्न द आर्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग फ्रॉम इंडिया. ठीक है, वही है. द आर्ट आपने एक नया वर्ड दे दिया है. नथिंग एल्स. द चाइनीज लर्न कॉटन ग्रोइंग फ्रॉम इंडिया. Who founded the number 2 question D2? Who founded the city of Yashodhpur in Kamboj? यशो बर्मन. यशो बर्मन. सिर्फ नेम लिखिएगा और उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं. यशो बर्मन. लिख लिया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबका हो गया? किसी का छूट रहा है? ए और बी. डी का ए और बी हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Number 3. Why was Roman historian Pliny against having trade relation with India? अब इसको देखिए अर्कजा यशस्वी, आप भी इसको देखिएगा. मैम यस मैम एक बार यस. सेकंड का आंसर मैम रिपीट कर दीजिए ना. यशो वर्मा. सिर्फ यही है उसका. यशो वर्मा. Who founded the city of यशोधपुर in Kamboj का है यशो वर्मा. आपको लिखना है सिर्फ और नथिंग एल्स. यशो वर्मा. राइट, यशो वर्मा. यस मैम. क्लियर हो गया? यस मैम. Okay. Why was Roman historian Pliny against having trade relation with India? देखिए, रोमन हिस्टोरियन प्लिनी, रोमन हिस्टोरियन प्लिनी deplored DEPLORED deplored
Roman historian Pliny deplored Ma'am, spelling. D-E-P-L-O-R-E-D, deplored the India's trade, या सीधे उसको छोड़ दीजिए, सीधा लिखिए रोमन हिस्टोरियन प्लिनी वांटेड टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ रोमन वेल्थ टू इंडिया. देखिए रोमन हिस्टोरियन प्लिनी वांटेड टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ रोमन वेल्थ टू इंडिया. अर्कजा यशस्वी. Yes, ma'am. आपने इस आंसर को क्लियर किया? Yes, ma'am. किया. तो इस आंसर को क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर बताइए. तो आपने क्या लिखा? Why was Roman historian Pliny against having trade relation with India? बताइए आपने क्या लिखा? Roman historian Pliny wanted to stop Roman wealth to India. कहाँ फिर गलत लिखा तुमने? फिर तुमने गलत लिखा. मैम may I repeat? पृथ्वी संगम. पृथ्वी संगम, हाँ रिपीट करिए. Why was Roman historian Pliny against having trade relations with India? Roman historian Pliny wanted to stop the drain of Roman wealth to India. यही था अर्कजा यशस्वी. Yes, ma'am. Wanted to stop के बाद मैम. देखिए क्वेश्चन में ही चले जाइए. रोमन हिस्टोरियन प्लिनी was against having trade relation with India because he wanted to stop the drain of Roman wealth to India. जो रोम से जो पैसा आता था उसको वो रोक देना चाहता था, इसलिए उसके बिजनेस के ही वाज अगेंस्ट द. क्वेश्चन से लिखेंगे पृथ्वी संगम. आर यू लिसनिंग मी? पृथ्वी संगम. Yes, ma'am. आप अगेन इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर बताइए. व्हाई वाज रोमन हिस्टोरियन प्लिनी अगेंस्ट हैविंग ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया? बताइए. Roman historian Pliny wanted to stop the drain of Roman wealth to India. देखिए अभी मैंने क्वेश्चन को फिर थोड़ा चेंज किया पृथ्वी संगम, इसलिए ही मैंने आपको फिर से बोला कि आप इस आंसर को एक बार पढ़िए. लेकिन आप जो है बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, मैंने फिर से कहा था. एंड फिर से अगेन आई विल आस्क, किसी नए बच्चे से पूछूंगी. व्हाई वाज रोमन हिस्टोरियन प्लिनी against having trade? I am this time here I am reading the question answer, question only. इसलिए प्लीज पे अटेंशन, ध्यान देंगे आप लोग सारे लोग. Why was Roman historian Pliny against having trade relation with India? क्वेश्चन से ही मैंने आंसर को लिखना शुरू किया. रोमन हिस्टोरियन प्लिनी वाज अगेंस्ट. प्लीज जस्ट वेट, मुझे एक बार आंसर देने दीजिए, उसके बाद रिपीट करिएगा. Why was Roman historian Pliny against having trade relation with India? Roman historian Pliny was against having trade relation with India because he wanted to stop the drain of Roman wealth to India. This is the answer. This is the answer. अर्कजा यशस्वी, आपने आंसर सुन लिया? Yes, ma'am. अब बोलिए तो क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए. Who is there? Who is asking? Can I repeat? कौन पूछ रहे हैं? Who is asking this? बोलिए. Yes, ma'am. मैं बोल रही हूँ. Why was Roman अभी किसी historian? ने पूछा था,
अर्कजा जस्ट वेट, किसी ने पूछा था कि कैन आई रिपीट इट, किसने पूछा था? Who has asked? कौस्तुभ नारायण। कौस्तुभ नारायण ने पूछा था। हाँ कौस्तुभ बोलिए तो एक बार इसका तो किसने पूछा था? was हाँ बोलिए कौस्तुभ नारायण। कौस्तुभ नारायण, कौस्तुभ why you are silent? अर्कजा यशस्वी नाउ बोलिए। Yes, ma'am. Why was क्वेश्चन पढ़िए, Roman आंसर पढ़िए। Yes, ma'am. Why was Roman historian Pliny against having trade relation with Roman historian Pliny against having trade relation with India because he wanted to stop the drain of Roman wealth to India. वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कोई और जो इस क्वेश्चन को फिर से बताएगा? मैम पृथ्वी संगम। हाँ जयंत बोलिए, जयंत बोलिए, Why was जयंत बोलिए, उसके बाद अभिज्ञान बोलेगा। Why was Roman हाँ historian Pliny against having trade relation with India? History planning against having trade relation with India because he wanted to stop the drain of Romans wealth to India. बहुत बढ़िया। नाउ अभिज्ञान सिन्हा बोलिए। मैम हो गया। Why अभिज्ञान सिन्हा बोलिए। was Roman history Pliny against having trade relations with India? Answer: Roman historian Pliny was against having trade relations with India because he wanted to stop the drain of Roman wealth to India. बहुत बढ़िया। ऋषिता भारती, ऋषिता भारती। Yes, ma'am. Why was Roman historian Pliny against having trade relations with India? Roman historian Pliny against relations with India because he wanted to the drain of Roman wealth to India. यस, सारांश 6B, सारांश, सारांश 6B बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, D2 का सारांश। यस सारांश। नो, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू सारांश। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, D3। यस, नाउ D3, ओके। ओ सॉरी, हो गया। यस, हाउ डिड बुद्धिज्म रीच द वेस्टर्न कंट्रीज? मैम थ्रू धर्म विजय यात्रा। बोलिए क्या? हाँ, थ्रू धर्म विजय यात्रा। धर्म विजय यात्रा ऑफ अशोक। Yes, ma'am. अरब से लिखा है। अरब से गया था। कहाँ लिखा हुआ है अरब से गया हुआ है? तो आप लोग Yes, ma'am. आपने हम लोग 6B में यही लिखा था। कब लिखवाया था मैंने, बताइए। मैम लिखवाई थी मैम। क्या लिखवाए थे बताइए, क्या लिखवाए थे बताइए। मैम लिखवाया था बुद्धिज्म रीच आंसर भी करवा दिए मैम, कॉपी। थ्रू अरब लिखाए थे। आई डोंट थिंक अरब इज द राइट आंसर। में है our relation with Central Asia are very old. Our culture across the mountains reached there due to the policy of Dharma Vijay Yatra of Ashoka. यही होगा, धर्म विजय यात्रा ऑफ अशोक का ही होगा। अशोका ने ही उसको कराया था। यस, वेस्टर्न कंट्रीज में यही होगा।
देखिए जैसे यहाँ भी दिया पेज नंबर 157 में आप देखिए, मिशनरीज वेयर सेंट टू मेनी कंट्रीज, मेनी वेस्टर्न कंट्रीज बाय अशोका टू प्रोपागेट बुद्धिज्म। पेज नंबर 157 में आप देखिए, missionaries were sent to many western countries by Ashoka to propagate Buddhism. Have you got the answer? Yes, ma'am. मिला? Yes, ma'am. 157 में ही है मैम, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया। वो तो पता है हमको, इंडियाज कॉन्टेक्ट विद सेंट्रल एशिया में विद द वेस्ट में है। तो वहां का जो फर्स्ट पैराग्राफ है 157 का फर्स्ट पैराग्राफ आप देखिए, तो लास्ट लाइन देखिए, मिशनरीज वेयर सेंट टू मेनी वेस्टर्न कंट्रीज बाय अशोका टू प्रोपागेट बुद्धिज्म। अर्कजा यशस्वी? Yes, ma'am. मिला? हैव यू गॉट द आंसर? Yes, ma'am. All of you please correct your answer. इसका B होगा ना, it was reached through धर्म विजय यात्रा of अशोका। वेस्टर्न कंट्रीज बाय अशोका स्प्रेड। इस तरह से सीधा लिखिए, मिशनरीज वेयर सेंट टू मेनी वेस्टर्न कंट्रीज बाय अशोका टू प्रोपागेट बुद्धिज्म। यस मैम, ये हम लिखे हैं। या इस तरह होगा, द बुद्धिज्म रीच द वेस्टर्न कंट्रीज बाय अशोका, बाय अशोका। डायरेक्ट यही लिखिए, बुद्धिज्म मिशनरीज वेयर सेंट बाय अशोका, जो आपके बुक में दिया है लाइन। हैव यू गॉट द लाइन? यस मैम। ऑल ऑफ यू, यस और नो? Yes, missionaries ma'am. were sent to, yes, missionaries were sent to many western countries by Ashoka to propagate Buddhism. This is the answer. Now D5. Can I repeat? Yes, repeat. Question पढ़िए, आंसर बताइए। How did Buddhism reach to the Western countries? Missionaries were sent to many Western countries by Ashoka to separate Buddhism. क्या बोल दिए तुम जयंत? क्या बोले, कुछ समझ ही में नहीं आया। कौस्तुभ नारायण पढ़िए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौस्तुभ Yes, नारायण। ma'am. How did Buddhism reach the Western countries? Many missionaries were sent by Ashoka to many countries to propagate Buddhism. टू वेस्टर्न कंट्रीज है कि मेनी कंट्रीज है? And to many Western countries. टू मेनी वेस्टर्न Yes, and to कंट्रीज। many Western countries. Yes. Now ऋषिता भारती, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। How did Buddhism reach the Western country? Missionaries were sent to many Western countries by Ashoka to propagate Buddhism. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ D5. Mention any two main features of stupa at Borobudur in Java. सीधा क्वेश्चन से लिखे, टू मेन फीचर्स ऑफ द स्तूपा एट बोरोबुदुर इन जावा आर। नंबर 1 लिखिए, पेज नंबर 158 में देखिए। First point होगा, there is a big statue of Buddha and nearly 1,500 Buddha painting on its corridors. Yes ma'am. First point होगा, there is a big statue of Buddha at nearly 1,500 Buddha paintings on its corridor. Yes ma'am. Ma'am, second point. There are also many Shiva temples. There are also many Ma'am, number Shiva 2 temples. use. क्या? Ma'am, इसमें number 2 में ma'am it has been built on hilltop. No, ये तो बना ही हुआ का मेन फीचर बताना है कि क्या क्या है। तो देयर इज अ बिग स्टैचू ऑफ बुद्धा का, वहाँ बहुत बड़ा मूर्ति है जो वहाँ फीचर है, और 1000 बुद्धिस्ट पेंटिंग्स भी है इसके कॉरिडोर में। नंबर 2 है, बुद्ध के अलावा एक और चीज है वहां पर, देयर आर ऑल्सो मेनी शिवा टेम्पल भी है।
Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now पृथ्वी संगम इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर बताइए तो। पृथ्वी संगम। Yes, ma'am. Question number 5. Mention any two main features of the stupa of Borobudur in Java. Answer. Two main features of the stupa of Borobudur in Java are: first point, there is a big statue of Buddha and nearly 1500 Buddhist paintings on its corridors. Second point, there are also many Shiva temples. बहुत बढ़िया। और कोई है जो इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे? मैम कौस्तुभ। कौस्तुभ पढ़िए तो। पढ़िए कौस्तुभ। क्वेश्चन और आंसर दोनों। Main features of the stupa at Borobudur in Java. Two main features of the stupa at Borobudur in Java are: first, there is a big statue of Buddha and nearly 1500 Buddhist paintings on its corridors. Second, there are also many Shiva temples. बहुत बढ़िया। एक कोई और जो पढ़ सकते हैं? अर्कजा यशस्वी। क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़िए तो। अर्कजा यशस्वी। अर्कजा यशस्वी, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. क्वेश्चन Yes. और आंसर दोनों पढ़िए तो। हाँ। Mention any two features of stupas at Borobudur in Java. Answer. Two main features of stupa of Borobudur in Java are: number one, there is a big statue of Buddha and nearly 1500 Buddhist painting in its corridor. Number two, there are also many Shiva temples. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है E1 देखिए। E1 देखिए। Question E1, how did the Arab become a link in our trade with the West? E1. Now, go on page number 157. Go on page number 157. Yes, that is page number 157. Second paragraph. In the early 8th century, के बाद देखिए, India's trade and contact with the West were through the Arabs. In the early 8th century, India's trade and contact with the West were through the Arabs. They became a link between us and the West. Ma'am, which page number? Page number is 157. Arkaja, aap thoda please pay attention. In the early 8th century, India's trade and contact with the West were through the Arabs. They became a link between us and the West. They took the knowledge of science, mathematics, and medicine from India and put their own label and gave the same to the West. Many of our classics were translated into Arabic and Persian language. मिला? मैम इतना ही है। बस हाँ इतना ही है। Who will read this answer? मैम पढ़िए पृथ्वी तो संगम। पृथ्वी संगम। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। E1. How did the Arabs become a link in our trade with the West? Answer. In the early 8th century, India's trade and contact with the West were through the Arabs.
They became a link between us and the West. They took the knowledge of science, mathematics, and medicines from India and put their own labels and gave the same to the West. Many of our classics were translated in Arabic and Persian languages. Arkaja. Arkaja. How पढ़िए. did the Arabs become a link in our trade with the West? Answer. In the early 8th century, India's trade and contact with the West were through the Arabs. They become a link between us and the West. They took the knowledge of science, mathematics, and medicines from India and put their own labels and gave same to the West. Many of our classics were translated in Arabic and Persian language. Very Ma'am, good. can I? पढ़िए. Excuse me, ma'am. How Yes. did the Arabs become a link in our trade with the West? In the early 8th century, India's trade and contact with the West through the Arabs, they Where became through a the link Arab? through the हाँ. Arabs. West. They became हाँ. a link between us and West. They took the knowledge of science, mathematics, and medicine from us and from India and put their own label and give the same to the West. Many of our classics were translated in Arabic and Persian language. Yes. Arkaja, yes, Asri, you were asking something? Yes, ma'am. I was saying that I have written different answer before this. What the answer you have written? Ma'am, I have written in the early 8th century, the Arab has dominated the sea and land routes since the India's trade and contact with the West were through the Arab.